नमस्कार आणि योकार. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचो आयचो हो तिसरो दीस. आयच्या या तिसऱ्या दिसा ह्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या मळाचेर बऱ्योचश्यो घडणुको घडल्यो. बऱ्योचश्यो प्रेस कॉन्फरन्सीस, बरेचशा चित्रपटांचे मार्गदर्शक आणि तांच्या तज्ञांकडचे मार्गदर्शन आमी सगळ्यांनी पळयलें, अणभवलें लेगीत. आणि ह्यो सगळ्यो घडणुको तुमच्या खातीर दूरदर्शनाच्या माध्यमांतल्यान आमचे वांगडी घेवन येत असतात. आयज लेगीत ह्या तिसऱ्या दिसाक ज्यो घडणुको घडल्यो त्यो तुमच्या खातीर घेवन आयल्यात दूरदर्शनाचे आमचे वांगडी. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात फेस्टिवल कॅलेडोस्कोप म्हणून एक विभाग आसा. ह्या विभागात पोरणे चित्रपट निर्माते, कलाकार आणि तंत्रज्ञ तसेच नव्या पिळगेंतल्या चित्रपट निर्माते, कलाकार आणि तंत्रज्ञांचे चित्रपटांचे प्रदर्शन जाता. ह्या फेस्टिवल कॅलेडोस्कोपा विशीं चड माहिती दिल्या लुशन फर्नांडीस हांणी. Yes, a Spanish film, Close Your Eyes, was one offering at the festival today that made sure the viewers kept their eyes wide open. Sí, me han llamado varias veces, pero no voy a participar en ese programa. ¿Tú sí? Me lo pensé mucho, pero al final decidí hacerlo. Ayer grabé la entrevista. Me han prometido incluir una parte de lo último que Julio y yo rodamos juntos. Eso y también dinero, no te lo voy a negar. Por los derechos. ¿Tú crees que la gente se acuerda de él? No todo el mundo, pero más de uno sí. Nunca hemos hablado tú y yo de lo que pasó. Bueno, de lo que pudo pasar. Es verdad, hablé con tu madre, pero contigo no. Leí que en el último viaje que hizo en coche alguien le vio y que iba acompañado, que iba con una mujer. Directed by Victor Ariz, this is a story about a famous actor, Julio Arenas, who disappears while filming a movie. His disappearance remains a mystery for a long time. Many years later, the mystery is brought up once again by a TV program involving his close friend, director Miguel Garay, which tries to evoke the actor and get to the bottom of the unsolved story. Yo he soñado más de una vez que él estaba vivo. Cuando me despierto trato de olvidarme de esa idea. Total, ¿para qué? Si está vivo y no aparece es porque no quiere. No quiere saber nada ni de mí ni de nadie. A mi hijo apenas le he hablado de su abuelo. Sabe quién fue, pero poco más. Si pasan por televisión alguna de sus películas ya no las veo. Él no lo sé. Yo las vi de niña, no todas. El cine tiene esa cosa tan rara. Ves a un personaje que te dicen que es tu padre. Lo ves de cuerpo entero, con su voz. The film, which featured at various festivals around the world, including London, Busan and Toronto, was well received by the multinational delegates that have landed here at the festival. This is Lushan Fernandes at the 54th IFFI in Goa. वैभव आनंद ज्यांच्यानी विवाह आणि बाबुल सारख्या चित्रपटांचे दिग्दर्शन केले आसा तांच्याकडून उलोवप केला एलरॉय फर्नांडीस हांणी. Have with me Mr. Vaibhav Anand, who is part of the project for the restoration of Indian classics. Could you tell us a little bit about your experience first up, and then maybe explain to us a little bit about the techniques that have been employed for the restoration of these classics, something that you have witnessed yourself? Firstly, I would like to thank the Government of India and IFFI, also NFDC, the Film Heritage Foundation, who all I've so far been associated with, for a very kind gesture to invite me here. This is my first time in IFFI. I think after 15 or 16 years in Goa. I'm not a Goa person, I'm a Mumbai guy. So this is an eye-opener. The air is cleaner. And the people are friendly and warm. And I got to try a penny yesterday, first time. So far it's been fantastic. I feel it is still to grow. I hope that it can expand in also space, so a lot more centers can be created, because this initiative will only go up. And I think IFFI is doing a fantastic job on that front.
And to answer your second question, I was privy to firsthand to how they are digitalizing and restoring the prints. And I was just spellbound that the technology that has been brought in, because very few centers existed like this in the past, and they were very expensive. And unfortunately, a lot of people are hesitant to convert the classics into restoration because who will see it? You know, where will they go? And it's a very expensive process, and then you have to take care of the original material, which is a special lab, a special dehumidifier, a special room that's needed. So to see how the government has created this space, which is in Pune, I said, wow, you know, and they have also commissioned, I was told, 600 crores, which is a lot of money. And the technicians who I got to meet, they're just not ordinary technicians, they're trained. I think also from Germany, from US, from India. So it's a collaboration. So it makes you feel, oh, this is our legacy. And there is value to it, whether it is sentimental or passionate or monetary or emotional, but there's value to it. And the appreciation for that is what really touched me. Yeah. You come from a very strong film fraternity background. Your dad also was a famous filmmaker. To be able to witness some of his movies restored, how did that make you feel? What was your feeling at that point of time? You know, when you see something which he made, which is now still available and will be available for future generations, how does that make you feel? It was a bittersweet moment. We got to see 3 of his films. CID was Raj Khosla Saab, so 3 of his films, which was Jewel Thief, Johnny Mera Naam, which is producer Gulshan Rai. His son was there, Rajiv. And of course, Guide, which you will be watching. What moved me most was they also wanted to do a retrospect on him, my father, Vijay Anand. And there's a collection of 15-20 of his films that can be shown. So we had a lot of talks with the Heritage Foundation to begin with. And I think I'll also discuss with Government of India because we can do something for his birthday. Because I realized the most important thing is there's an audience for Vijay Anand. And I was like, wow, because they came for him. They came for Dev Anand, but they came for him. And it just moved me till today. They are his fans. And the next generation is beginning to see that work. So that was even more moving. So from that point of view, it was very special. Thank you so much for taking the time to talk to us and all the very best for the film. Yes. ॲनिमेटेड चित्रपट डॉक्टर माइनस्टोन हांच्याकडे संबंधित सोनाली जावळे हांच्याकडे उलोवप केला रुना अग्रवाल हिणे. हम आपसे 54वें IFFI से जुड़ रहे हैं और बाहर लगातार ज़ोरदार लाइट्स कैमरा एक्शन का सिलसिला जारी है. यहाँ पर अभी हम बातचीत में हैं श्रीमती सोनाली जावड़े से, जिनकी फिल्म डॉक्टर माइनस्टाइन इस साल एनिमेशन कैटेगरी में स्क्रीन हो रही है. सोनाली जी, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद. ये बताइए आपके फ़िल्म के बारे में क्या है. इसमें आपको हम लोग नेचर के ऊपर जो हम लोगों ने किया है, यानी हम लोगों ने ये मूवी किस लिए बनाई है, वाटर के लिए बनाई है, नेचर के लिए बनाई है, अर्थ के लिए बनाई है, वो इसमें सब दिखाई दिया गया है हमारे से. और ये जो मूवी है वो आप बच्चों को भी दिखा सकते हैं, ओवरऑल फैमिली भी जाके देख सकती है. बच्चों को इसलिए दिखानी है कि अगर आज ये बच्चों ने देखी मूवी कि एनवायरनमेंट में क्या क्या चल रहा है, तो वो आगे चल के उसमें रोक सकते हैं. दूसरी बात ये है कि पॉल्यूशन इसलिए बढ़ रहा है अपने यहाँ पे, हर जगह पे कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं, कार्स बढ़ रही है, कंपनीज़ बढ़ रही है. उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से अपनी जो अर्थ है उसमें जो जंगल्स है, वाटर सप्लाईज है, ऑक्सीजन लेवल है, वो सब डाउन होता जा रहा है. तो मैं इतना ही सजेस्ट करूँगी कि आप ये सब मूवी देखो, सब बच्चों को दिखाओ, सबको बताओ. ये बात है कि हमारी ये मूवी में कोई भी रिलीजियस की बात नहीं हो रही है, माइथोलॉजी नहीं है, बायोपिक नहीं है, ये ओवरऑल नेचर के ऊपर ही डिपेंड है. ज़ाहिर है क्योंकि आजकल प्रकृति की चर्चा इतनी हो रही है और जो हम लोगों ने प्रकृति को छोड़ रखा है, अगर अभी रोकना आए तो शायद हमारे बच्चों के लिए कुछ ना बचे. पर क्या कोई प्लान है कि ये पाठशालाओं में दिखाई जाएगी ताकि और बच्चों तक पहुँचे? क्योंकि फिल्म फेस्टिवल में तो बच्चे तो एक तो दिखेंगे नहीं, होंगे नहीं, ज़्यादातर बड़े होंगे और उन बड़ों में से बहुत सारे तो एजुकेशन के माध्यम में नहीं होंगे. तो पाठशालाओं में दिखाने का कोई प्लान है?
हाँ, अगर हमें सरकार हेल्प करेगी या हमें बोलेगी या कोई स्कूल्स कॉलेजेस हमें अप्रोच होंगे कि हमें दिखाइए, हम जाके उनको भी दिखा सकते हैं, हम लोग उनको भी बता सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर वो कुछ हद तक हमें भी हेल्प करेंगे तो हम लोग भी हमारे नेचर को हेल्प कर सकते हैं। आपकी फ़िल्म में एक और चीज़ है, जो आपके प्रोटैगनिस्ट हैं, आपने गधे को चुना है, जो नॉर्मली जब हम बातचीत में ज़िक्र करते हैं तो गधे को तो आप जानते हैं हमेशा वो तो होता है जिसको ना कुछ समझ आता है और किसी भी चीज़ का हल तो गधा कभी निकालता नहीं है, पर वो आपने उल्टा दिया अपनी पिक्चर में। ज़रा और बताएंगे? क्योंकि कैसे गधे को अगर हम लोग काम देते हैं तो वो वही काम करता रहता है और वो यानी एकदम मेहनत से काम करता है, यानी वो यहाँ वहाँ नहीं जाता। उसकी जगह हम लोग किसी और को लेते तो वो एक काम नहीं करता। अगर वो ह्यूमन भी हो या कोई और भी हो, वो काम एक नहीं करता। वो एक काम आधा करेगा, दूसरा आधा करेगा, यानी कंप्लीट नहीं। गधा कैसा है, वो नेचुरली वो बुद्धि है उसमें, क्योंकि उसको जो बताया जाता है मालक या कोई है सरकार कि ये काम तुझे करना है तो वो वही हिसाब से करता जाता है। जो गधा मजूरी बोलते हैं, बस एक ठान लेके वही काम करता रहता है। आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? खास कर दर्शकों से यही बात करना चाहूँगी कि अपने नेचर को बचाओ, पानी का यूज़ कम करो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, प्लास्टिक कम यूज़ करो जिससे नेचर को हानि पहुँच रही है, और जहाँ आप जाओगे वहाँ पे पेड़ लगाना स्टार्ट करो जिससे अपनी अर्थ भी बेटर हो जाएगी। और इफ़ी के अलावा और कोई फेस्टिवल्स में दिखाने का प्लान है आपका? अभी चल रहा है हम लोग का। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवान आयच्यान सुरवात जालो नॉन फीचर फिल्म विभाग. ह्या नॉन फीचर फिल्म विभागात आयज प्रदर्शित जालें ब्रेक्झिट इंडिया हो चित्रपट. ह्या चित्रपटा विशीं चड म्हायती दिल्या श्याम गांवकर हांणी. इश्टानो, आमचे पणजीन सध्या इफ्फी नेट घेवपाक लागल्या. जायते फिल्मी जगतांतले व्हडल्यो व्हडल्यो हस्तियां सध्या गोंयांत फिल्माचो आस्वाद घेवपाक लागला. आनी हे आमी पळयता जेन्ना हो परिसर, एकंदर परिसर समजा पळयत जाल्यार जायते लोक हांगासर मोठ्या उमेदीन येता. इश्टानो, इंडियन पॅनोरमा ही एक खाशेलो विभाग आनी अंदूच्या इंडियन पॅनोरमा खातीर द वॅक्सीन वॉर, द केरला स्टोरी, कातारा, गुलमोहर ह्या सारक्या फिल्मांची अधिकृत निवड जाल्ली आसा. 54व्या इफ्फी इंडियन पॅनोरमा कडल्यान वेचून काडिल्ले 25 फीचर फिल्म आनी 20 बिगर फीचर फिल्म दाखोवपाक सुरवात जाल्ली आसा. फिल्माची निवड प्रक्रिया सिनेमॅटीक, थिमॅटीक आनी एस्थेटीक ह्या अशा स्वरुपाची आसा. भारत सरकारच्या माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळाचे वतीन आयोजीत केल्लो भारतीय पॅनोरमा नियमा प्रमाण फिल्म विशय, सौंदर्य हाचेर आधारीत फीचर आनी नॉन फीचर फिल्माची निवड करता. इंडियन पॅनोरमा अंतर्गत विवेक अग्निहोत्री हांचो चित्रपट वॅक्सीन वॉर, सुदीप्तो सेन हांची केरला स्टोरी, तशेंच मुखेल प्रवाहांतल्या सिनेमा विभागात मनोज वाजपेयींची 2 फिल्मां आसात. इश्टानो, आयज सुधांशू सारिया हांचे सना हे हिंदी फिल्म आनी मणी रत्नम हांचे पोन्नियन सेल्वन ह्या तामीळ फिल्माच्या दुसऱ्या भागाक सिनेमोग्यांनी आयज बरोच प्रतिसाद दिल्लो आसा. इश्टानो, 1947 ब्रेक्झिट इंडिया हे संजीवन लाल हाणें दिग्दर्शीत केले बॉलिवूड डॉक्युमेंटरी फिल्म. ह्या फिल्माच्या स्टार कलाकारां मदीं बोमन इराणी हांणी मुखेल भुमिका साकारल्या. राजा नारायण देव हांचे संगीत आसा आनी 1947 ब्रेक्झिट इंडिया ही भारत आनी अमेरिकन निर्मिती आसा. ह्या सिनेमा विशीं उलयतना बोमन इराणी, जे ह्या फिल्माचे मुखेल स्टारकास्ट आसा, तांणी म्हळां, कथाकार म्हण आयच्या प्रेक्षकांक गुंतोवपा खातीर इतिहासीक कथन सादर करचें आव्हान आपणे स्विकारलां. फक्त घडणुकाचें न्हय, तर एक मनशाच्या शोकांतिकेचें संशोधन आनी आमच्या इतिहासांतलो एक मुखेल असो खीण आसा. 1947 ब्रेक्झिट इंडिया ही मनशाच्या शोकांतिकेचो सोद घेवपाची फिल्म आसा अशें बोमन इराणी म्हणटात. इश्टानो, इंडियन पॅनोरमांतल्या सगळ्या फिल्मांतलो तुमी मुजरत आस्वाद घेवचो आनी अंदूचो आंतरराष्ट्रीय फिल्म एक दर्जेदार करपाक तुमची मदत जाय. धन्यवाद. चेतन आनंद हांचे पूत केतन आनंद आयज इफ्फीच्या कॅम्पसात आशिल्ले. तांणी हकीकत आनी देवानंद हांच्या वेब सिरिजाची घोषणा लेगीत प्रेस कॉन्फरन्सांत केली. तांचे कडेन चड उलोवप केला ओरिना वाज हांणी. At the 54th IFFI, and we are speaking to noted film director and from the Anand family, the filmy family here, Mr. Ketan Anand. Sir, thank you for speaking with us and welcome to Goa. Thank you so much.
we're speaking on the Indian restored classics from the National Film Heritage Mission. What do you think about the restoration of these films? We just saw the trailer of also your family film Hakikat. See, it's a fantastic technology, the 4K technology, but as I mentioned in the conference earlier, the human eye can only see 2K. But now with the digitization, it becomes smoother and smoother and smoother. It almost looks like it was shot yesterday. So digital world is here and it is our future, and it'll go out, take us even further and further away. I mean, we can't even dream of where it is going because AI will be here and all that. But it will never take anything away from the basic humanness of our profession, which is to give you stories about ourselves and about life. So that's where the machine can't interfere. The machine may talk about itself some other day, but it is us who will have to tell our stories. They may be able to tell it in reflection, but that will not be the reality. That will be in reflection, So restoration is necessary because you must know your classics. You must know your history. You study history in school, so why not the history of cinema? Why not the history of something that Saurabh Modi did or something like Prithvi Raj Kapoor did? They were great people, And then after the the independent people, 46 was my father's Nicha Nagar, it was before partition. K. Abbas wrote the dialogues, and Hayatullah Ansari, a very known Urdu writer at that time, wrote the screenplay, and my father directed it. My father was more influenced by Czech and Russian cinema. So Nicha Nagar is based on that kind of cinematic technique. And even today, you look at the technique, you look at the montages and the kind of editing they have done in Nicha Nagar, it's mind-blowing because even the cutters of today wonder where the hell did they do this from, in that little machine where you have to cut it with the blade and actually join two half frames cut together. Today you press a button and cut and paste, Today you're creating music like that, cut and paste. There they had to take the full take of a song. And if the singer or a musician faulted, start all the way from the beginning again. So these people must know how we grew and what we came to. It's part of learning, it's part of education. So what are your future plans in filmmaking now? I'm working on a web series for Mr. Devanand's Celebration, I call it, not just his life. And I will do Hakikat 2 also. Thank you for all that you've done for Indian cinema and your role in this heritage mission of preserving and restoring films. Thank you so much. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात बरेचसे डेलिगेट्स रजिस्टर करतात आणि हे डेलिगेट्स असतात तरी कोण? चित्रपट मोगी असतात आणि चित्रपट तंत्रज्ञ लेगीत असतात. अशाच एका चित्रपट तंत्रज्ञाकडून उर्वप केला बांबिनो हाणी. At IFFI today, Ponniyin Selvan 2 was screened. It is the first South Indian film to be released in 4DX format and currently is the third highest grossing Tamil film of 2023 and one of the highest grossing Tamil films worldwide. This is based on a novel written in 1954 by Kalki Krishnamurthy. Joining me here, I have Nitin. Nitin is all the way from Dharwad. He's a budding filmmaker. Nitin, you have watched the film thrice already? Yeah, I have, yeah. And did you also watch the first edition? Yeah, I did watch the first one, yeah. All right. Being a filmmaker, what do you take home by watching this? It's a really thrilling movie. The set is really wonderful. And what do you take back from this movie? I think to marry the VFX and the practical effects of a film, that is really well done over here. There's no place to look for flaws over there. And the camera work is absolutely brilliant, the lensing and everything else, the technical side of it. And also to take 12, 13 primary characters and then putting them all inside a 2.5 hour, 40-minute film it's absolutely brilliant, yeah. Yes, it's a long film, but it's really brilliantly made. The sets is really fabulous. Now, coming to you, can you share a little bit about yourself? What do you do? I'm a visual arts student. I study painting in Dharwad. I'm in the third year now, and I also do films, short films on the side by myself. Yeah. And this is your first time you're at IFFI. What are you going to take back? It's actually a brilliant event. There's a lot of filmmakers. There's a lot of like-minded people around me. So there's a lot to learn from people and interacting with other filmmakers as well.
Fantastic. Thank you very much, Nitin, and all the very best to you in your future. So that was Nitin from Dharwad sharing his thoughts about the lovely movie PS2 and, of course, about IFFI 54. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातल्या सिनेमा ऑफ द वर्ल्ड ह्या विभागात 78 देशांतल्यान वेचून काडिल्ल्या चित्रपटांचें प्रदर्शन जाता. आयज ह्या विभागात थंडर्स ह्या चित्रपटाचें प्रदर्शन जालें आणि ह्या चित्रपटा विशीं चड म्हायती दिता शालीन. Day 3 into the 54th International Film Festival of India, and I'm here to give you a quick look into one of the many films showcased in the Cinema of the World section, which offers a fabulous treat to delegates as it features a number of films from around the world. One such film screened was director Ion Bobeka's Thunders, a story set soon after the war in 1992. Ai auzit? Iar sunt furie Dumnezeu. Ce face Dumnezeu? Îmi nuați ștonă. Zinka and Victor, two Moldavan children whose friendship creates issues for their families as the boy's father objects to their friendship on the grounds that the girl belongs to a lower financial background. The story builds up when the kids enter a heavily mined field to save Zinka's cows. This leads to a situation that puts both their lives in danger. Zinka, nu te ești ca mama dracului! Victor, noi suntem aici! Să duci spre Victor. The film will be Moldova's official entry to the Oscars in 2024. I'm Shalane Estibeiro signing off and promising to bring you more from IFFI 2023. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या मळार तरेकवार चित्रपटांचें प्रदर्शन जाता. ह्या चित्रपटांचें प्रदर्शन जेन्ना जाता तेन्ना ताका क्रिटिकल नदरेन पळोवप खूबच म्हत्वाचें आसता. कित्याक तर ह्या चित्रपटाची खोलाय कितें आसा, ह्या चित्रपटाचो अर्थ कितें आसा, सामाजीक महत्व कितें आसा, अश्यो बऱ्योचश्यो गजाली ह्या क्रिटिकल नदरेंतल्यान आमी अणभवपाक शकतात. आमचेच क्रिटिकल तज्ञ सचिन चट्टे हांचे कडेन उलोवप केल्लें आसा श्याम गांवकर हाणें. साथियों, अगर आज की बात करें तो गोवा में ढेर सारी फिल्में यहाँ देखने को मिलती है और ढेर सारे लोग यहाँ आए हुए. आप लोगों को एक मन में इच्छा होगी कि कौन सी फिल्में यहाँ दिखाई दे रहे हैं और कौन सी फिल्में दिखाई देने वाली है. तो दोस्तों साथियों, हमारे पास हमारे साथ सचिन चाट्टे है जो जिनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि फिल्मों के बारे में और कुछ थोड़ी जानकारी. तो सचिन जी नमस्कार. नमस्कार. क्या माहौल है फिलहाल जो गोवा में इफ्फी की अगर बात करें तो? काफी सारे लोग आए हुए हैं, उनको सबको फिल्में देखना है क्योंकि भारत का अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है और यहाँ विश्व भर से फिल्में दिखाई दे रही है और इंडियन पैनोरमा भी है. तो आपको जिस तरह की फिल्में चाहिए, आपको थोड़ा अगर एक्शन चाहिए, थोड़ा सीरियस फिल्में चाहिए, सारी तरह की फिल्में यहाँ दिखाई दे रही है. अगर आज की बात करें तो आज की खासियत क्या थी? आज 2 फिल्में हैं जिस देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ. उनमें से एक फिल्म है हिंदी फिल्म है हकीकत. 1964 में बनी थी, 64 में बनी थी वो. चेतन आनंद की हकीकत, जिसे एनएफडीसी ने रिस्टोर किया है. एनएफएआई जो भी एनएफडीसी के साथ मर्ज किया है, उन्होंने इसे रिस्टोर किया है 4K की प्रिंट में. यानी एकदम लाजवाब क्वालिटी में ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देखने मिलेगी. और ये फिल्म ऐसी है कि ज्यादातर लोगों ने देखी नहीं होगी. और हमारे यहाँ काफी सारी फिल्में हैं जिनकी अच्छी देखने नहीं मिलती है. फिल्में तो बहुत सारी है, कुछ यूट्यूब पे भी देखने मिल जाती है, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है. लेकिन हमने एक झलक देखी थी ओपनिंग सेरेमनी कि इन फिल्मों को कैसे रिस्टोर किया गया है और उसमें बहुत बहुत फर्क है. तो ये 1964 की फिल्म, जानी मानी फिल्म, धर्मेंद्र साहब थे उसमें, बलराज साहनी थे, विजयानंद थे और डायरेक्ट चेतन आनंद ने किया था. और लाजवाब गाने हैं इस फिल्म में. होके मजबूर तुझे उसने बुलाया होगा, कर चले हम फिदा जानतन साथियों, कहीं ये वो तो नहीं जो लता मंगेशकर ने गाया था. तो गाने भी जबरदस्त है, कहानी भी जबरदस्त है. And it is set during the India-China war, so against that backdrop. And it's one of those cult classics. So I'm really looking forward to watch the 4K version of this film. उसके अलावा एक और फिल्म है कोरिया से, कॉन्क्रीट यूटोपिया नाम की, जो कोरिया की एंट्री है ऑस्कर्स में इस साल में. तो वो फिल्म अबाउट एक भूकंप के बारे में है कि सियोल शहर में भूकंप आता है और उसके बाद लोगों की क्या हालत होती है, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसके बारे में उस विषय पे है. तो वो भी फिल्म मुझे देखने की काफी उत्सुकता है. ये रही है आज की बात. अगर फिल्म जगत से जुड़ी ढेर सारी फिल्में यहाँ देखने को मिलेगी. अगर कल की बात करें तो क्या है हमारे लिए? तो कल की हाईलाइट मैं कहूंगा पर्सनली तो एक नूरी बिल्गे चलियान नाम के एक दिग्दर्शक है. वो टर्की से आए, तुर्की के है वो. और मैंने सुना है कि वो यहाँ आने वाले हैं. वो अगर आएंगे तो इस माहौल में 4 चांद लग जाएंगे क्योंकि बहुत ही जाने माने एक दिग्दर्शक है इन वर्ल्ड सिनेमा. तो उनकी नई फिल्म है अबाउट ड्राई ग्रासेस. तो वो देखने की मुझे बहुत ज्यादा उत्सुकता है. और अगर चलियान साहब आते हैं तो फिर तो 4 चांद लग जाएंगे.
उनकी सारी फिल्में लंबी होती है, ये भी करीब 3.25 घंटे की फिल्म है। 3.25 घंटे? हाँ, तो 197, हाँ काफी लंबा मैराथन है, तो उसके लिए पूरी अच्छे से तैयारी करके जाना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अबाउट ड्राई ग्रासेस इज वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ द फेस्टिवल। अच्छा, क्योंकि ये इसका इंडिया प्रीमियर होने वाला है कल, तो चाहे चलियान साहब आए ना आए, फिल्म तो जबरदस्त होगी, लेकिन अगर वो आए तो इसमें 4 चांद लग जाएंगे। अच्छा। उसके अलावा भी काफी सारी अच्छी फिल्में हैं। एक यूरेका नाम की फिल्म है, वो भी कल दिखाई जाने वाली है। उसके अलावा एक सी ग्रास नाम की फिल्म है, जो भी काफी फेस्टिवल्स में वर्ल्ड वाइड दिखाई गई, वो भी कल यहाँ दिखाने वाले हैं। तो सबसे बड़ा आकर्षण तो कल रहेगा अबाउट ड्राई ग्रासेस, और जहाँ तक मैंने सुना है कि सारी टिकटें बिक चुकी है। अच्छा। सबसे बड़े हॉल में होने वाली है ये फिल्म, लेकिन यहाँ जो लोग आते हैं उनको जानकारी है कि वर्ल्ड सिनेमा में बड़े नाम कौन से है। अच्छा। बड़ी फिल्में कौन सी है, तो लोग यहाँ जो आते हैं दे नो एवरीथिंग अबाउट वर्ल्ड सिनेमा। अच्छा। तो उसकी वजह से सारी टिकटें बुक हो चुकी। मुझे कुछ लोग बोलते हैं अरे कहीं कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या ये फिल्म देखने का, तो उसके लिए काफी ज्यादा उत्सुकता है। अच्छा। सचिन, अगर बात करें, जब हम जुड़ी बात, तो दर्शक है उनके मन में भी लालसा होगी कि मुझे भी जाके फिल्म देखनी है। अगर उनसे कोई भी एक फिल्म देखनी है तो उनको क्या करना पड़ेगा? अब काफी सारी जो फिल्में यहाँ होती है वो थिएटर में तो रिलीज होती नहीं है। अच्छा। स्पेशली जो फॉरेन फिल्म्स है। अच्छा। वो सिर्फ ओटीटी पे आती है। कभी कभी कुछ फिल्में ओटीटी पे आती है, या कुछ फिल्में ऐसी जो सिर्फ फेस्टिवल में ही आती है। अच्छा। तो अगर आप गोवा में नहीं देख सकते हैं तो आप केरला जाइए या कलकत्ता जाइए या जहीं दूसरे इसमें, क्योंकि काफी सारी ज्यादा जो फिल्में हैं वो सिर्फ फेस्टिवल्स में ही आती है। अच्छा। अगर कहीं आपको मौका मिला तो कुछ फिल्में, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में ओटीटी पे भी आती है। बट जहां तक हो सके ये फिल्में फेस्टिवल में ही देखने लायक होती है। जाते जाते थोड़ा सा इंडियन पैनोरमा के बारे में थोड़ी सी कुछ अच्छी फिल्में। तो इंडियन पैनोरमा में मेरे ख्याल से जो सबसे एक्साइटिंग सेक्शन रहता है वो नॉन फीचर का रहता है। यानी कुछ फिल्में जो फीचर फिल्म रहती है वो तो कहीं ना कहीं मिल जाएगी देखने के लिए, या तो थिएटर में आएंगी या तो ओटीटी पे आ जाएंगी। लेकिन जो नॉन फीचर फिल्म रहती है, जो शॉर्ट फिल्म रहती है, यानी कि 60 मिनट से कम, या जो डॉक्यूमेंट्रीज रहती है, वो देखने बहुत कम मिलती है। तो सिर्फ एक फेस्टिवल एक ऐसी जगह है जहाँ इन्हें देखने का मौका मिलता है। और पिछले कई सालों से देखा है कि जो नॉन फीचर फिल्म रहती है वो इंडियन पैनोरमा में काफी जबरदस्त रहती है। अच्छा। जैसे कि अभी इस साल जो नेशनल अवार्ड डिक्लेयर हुए वो थी एक था गाँव नाम की फिल्म थी, तो क्या जबरदस्त फिल्म है वो। तो डॉक्यूमेंट्रीज और जो नॉन फीचर फिल्म्स है, दोज आर मच मोर एक्साइटिंग इन इंडियन पैनोरमा। सो थैंक यू वेरी मच सचिन फॉर योर बेस्ट, जो आपने इन्फॉर्मेशन दिया बहुत ही बढ़िया था। सो दोस्तों साथियों, ये थे सचिन चट्टे जो हमसे बात कर रहे थे। आजच्या या तिसऱ्या दिवसा यशच्या ह्या कॅम्पसात बऱ्याच घडणुका घडत असतात। प्रेस कॉन्फरन्सेस म्हणा, तज्ञांचे मार्गदर्शन म्हणा, किंवा चित्रपटांचे प्रदर्शन, बरेच घडणुको आम्ही तुमच्या खातीर घेऊन येत असतात। ह्या सगळ्या घडणुकांचो नियाळ तुम्ही दूरदर्शनाचेर पळोवपाक शकतात, म्हणल्यारच DD गोवाचेर पळोवपाक शकतात। आमचे वांगडी तुमच्या खातीर तरेकवार म्हायती सदांच घेऊन येत रावतले। तुम्ही बी ट्यून इन करीत रावात DD गोवा। तो मेरेन तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं।